Good evening, guys. This is our second lecture of social religious reform movements. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था राजा राम मोहन रॉय एंड ब्राह्मण समाज के बारे में. गाइस, हम लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं कि हम लोग इंडिविजुअल एरियाज पढ़ेंगे फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सो दैट वो लर्न रहे. अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में 5-6 जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो सबसे प्रोमिनेंट थे. सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है. सेकंड वाज यंग बंगाल मूवमेंट. अब यंग बंगाल मूवमेंट कौन था? इट वाज लेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो. ये कौन थे? ही वॉज एन एंग्लो इंडियन टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज. वो बहुत रेडिकल थे, एज इन ही वॉन्टेड टू क्वेश्चन एवरीथिंग विद अ रीजन. ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड ही वॉज अ लेक्चरर इन हिंदू कॉलेज. गाइस, हिंदू कॉलेज जो फॉर्म किया था वो फॉर्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने. सो दिस इज अ पीटी पॉइंटर, सो रिमेंबर दिस थिंग. एंड ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया. ये भी एक पीटी पॉइंटर है, ये आप याद रखिए. लास्ट लेक्चर में हमने बताया था सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज वॉज विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, बट इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय डेरोजियंस. दैट इज जो लोग डेरोजियो को फॉलो करते थे उन्हें डेरोजियंस कहते थे. तो ये भी एक पीटी पॉइंटर है. नाउ दे वर against caste and they were against child marriage, they were against polygamy, they were for widow remarriage. ये तो सब में कॉमन मिलेगा. But this movement was inspired by French Revolution. तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा. Then after that, the third aspect of Eastern Indian social religious reform movements was Sanskrit Scholars, that is ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ICV मैंने लिखा है तो प्लीज आप इसे पूरा लिखिएगा. ईश्वर चंद्र विद्यासागर. Now he was a Sanskrit scholar of Sanskrit College. Guys, Sanskrit College भी जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था राजा राम मोहन रॉय ने ही बनाया था. But he was a principal of Sanskrit College. He inculcated or he incorporated Western education or Western thoughts into Sanskrit language. So unique. He also allowed non-Brahmins to enter into the education scenario. That is, he wanted to break the monopoly of Brahmins only to get the education. He focused more on the widow reforms. That is, because of him, first legal Hindu widow remarriage happened, and because of his efforts, law bana with respect to widow remarriage. And he was against child marriage, and he was also against polygamy. Now, after these two events, the most important part comes. That is Ramakrishna Paramhansa and Swami Vivekananda. We'll study first about Ramakrishna Paramhansa. He was also known as, जैसे उनका पहला नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय. ये एक पीटी पॉइंटर आप याद रखिएगा. He was a priest. He did not write anything, but his conversation formed the basis of the Ramakrishna mission or the Vivekananda's ideology. What did he do? He said कि salvation does not mean anything. It just means 3 things. It will come from 3 things. That is renunciation, meditation and bhakti. So ये आप ध्यान रखिएगा. And after that, he said कि he believed in the fundamental oneness of all religions. कि भाई सारे रिलीजन एक ही जैसे हैं, आप किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. सारे नाम अलग अलग है लेकिन गॉड तो सेम ही है. उन्होंने ये भी बोला था, ये एक पीटी पॉइंटर आप याद रखिए, दैट इज सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. ये आप ऐसे में भी ये लिख सकते हैं. अभी भी फिलहाल जो कोरोना वायरस का इशू चल रहा है उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है परफेक्टली. उनका पर्पस था, 2 पर्पस थे उनके. फर्स्ट वाज बैंड ऑफ मॉन्क्स क्रिएट करना है उन्हें, जो फॉलो करेंगे रिनेंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म. नॉट जस्ट एनी स्पिरिचुअलिज्म बट प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए उस स्पिरिचुअलिज्म में. नाउ स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या? स्पिरिचुअलिज्म मीन्स कामनेस ऑफ द माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, नो नेगेटिव थॉट्स, बीइंग पॉजिटिव, स्प्रेडिंग लव. नाउ दिस वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ड्यूरिंग रामकृष्ण मठ. And they were forming on focusing on the universality of all religions. That is, ये religion में कोई भेदभाव नहीं करते थे. Spread of love equally. That is, and this Ramakrishna Mutt was formed by Ramakrishna Paramhansa at Belur, Calcutta. And his second purpose was disciples. That is, to preach, to philanthropic activities and for charitable activities. But Ramakrishna could not this purpose could not be achieved by Ramakrishna. That is why Swami Vivekananda achieved this. How? We'll see in the next part. Swami Vivekananda, that is
Narendranath Datta, it is also a PT pointer, he formed a new culture, that is Neo-Hinduism sect. How he propagated Ramakrishna's message to all the world, that is within India also and outside India also. He was a nice propagator and he Indianized this, that is contemporary Indian society पे उनके spiritualism की ideology he converted it. And he was also against caste system, he was against ritual system, and he was against superstition also. Now what was his aim? उन्होंने कहा कि सर्विस शुड बी इक्विवेलेंट टू बिहेवियर, मतलब जो आपका परमार्थ है वही आपका व्यवहार होना चाहिए, दैट इज जो आप सोचते हो वही आपके बिहेवियर में आना चाहिए. एंड ही फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी इन डे टू डे लाइफ as was done by Ramakrishna Paramhansa. He also focused on mix, that is oneness of God. And he said that for a great India or for a great world, the conjunction or the junction between Hinduism and Islam is very important, that is these two things. He said कि knowledge is important and without knowledge anything is not important, but knowledge without action is useless. He also focused on mass knowledge. He said कि the masses should get two types of knowledge, that is first one is secular and the second one is spiritual. Secular for economic upliftment and spiritual for moral upliftment. He was focusing on Vedanta. Guys, याद रखिएगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्राह्मो समाज was also focusing on Vedanta. They believed in Vedanta. In fact, Vedanta College was also formed by Raja Ram Mohan Roy. Then after that, new culture. He focused on new culture for the whole world. That is, आपने ये पढ़ा होगा, that is वो स्पीच सुनी होगी जो वर्ल्ड फेमस स्पीच है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इन्होंने बोला था एट शिकागो यूएसए. इन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूएसए. तो इसी लाइन पे पूरी तालियों की गरजहाट सुनाई दे रही थी पूरे ऑडिटोरियम में, एंड वो अभी भी आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं. What did he do? For the new culture, he said there should be a blend of two things, that is materialism of the West and spiritualism of the East. And because of that, he focused on Ramakrishna mission. He set up Ramakrishna mission. अब इससे क्या हुआ ना कि disciples वाला जो second aspect था, because of Swami Vivekananda and Ramakrishna mission, the second purpose of Ramakrishna Paramhansa was fulfilled. What did they do? They focused on humanitarian relief. They focused on social work, that is disaster management, education, health, hospitals. अभी भी आप अगर जाओगे तो मोस्टली मेजर सिटीज में दिल्ली, कैलकाटा, चेन्नई, हर सिटीज में रामकृष्ण मिशन के ऑफिस मिलेंगे. सो दिस वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट टाइम 1897. ही सेड कि अगर आप सोशल वर्क करोगे ना तो यू विल सी डिविनिटी इन मैन. डिविनिटी देखने के लिए आपको भगवान की जरूरत नहीं या किसी पर्सन की जरूरत नहीं है. डिविनिटी आप मनुष्य में ही देख सकते हैं. And how? By doing social work. He proposed a doctrine of service, that is for spiritualism, and he also said that image worship is okay. इन्होंने बोला था idolatry is not good. That is Raja Ram Mohan Roy and Brahmo Samaj said did not focused on idolatry, but he said कि if the image is okay, what if the image drives someone to give or to get motivation from that image, then that image is good. अभी भी आप देख सकते होगे आपके घरों में या बहुत से ऑफिसेस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति या फिर फोटो होता है. मूर्ति तो नहीं होती लेकिन इमेज होती है उसकी. तो ये जो आइडियोलॉजी थी वो स्वामी विवेकानंद ही बोल के गए थे या रामकृष्ण मिशन ही बोल के गया था. बाकी सेम रहेगा कि ही डिड नॉट बिलीव ऑन कास्ट सिस्टम, ही डिड नॉट बिलीव ऑन चाइल्ड मैरिज, पॉलीगामी एंड ऑल. So this was all about the social religious reform movements of Eastern India. In the next video, we are going to learn about the social religious reform movements of West India. Thank you guys. I hope you are liking this series. Please comment below.